पहले काफ़ी 5-5, 6-6 फुट बर्फ़ पड़ जाती थी, अब बर्फ़ का नाम ही नहीं है। बर्फ़ पड़ती है तो हल्की फल्की वहीं पर ख़त्म हो जाती है। जो हमने देखा कि जब आदमी चलता था तो इसके पाँव जो हैं आधे 2-2, 1-1 फुट नीचे बर्फ़ में जाते थे। It's been described as the Himalayan tsunami. 2,200 hectares of forest land has been destroyed in a devastating fire blazing. Global climate change has brought chaos in the Indian Himalayan region. It is amongst the most fragile and vulnerable ecosystems. Rural communities in these parts are totally dependent on climate-sensitive livelihood sectors and thus face instant turmoil because of their least adaptive capacities and resilience. ओले गिरे थे एक साल, बहुत 7-8 दिन तक दिन रात बारिश हुई थी। आजकल सब बंजर पड़े हैं। ये सारे खेती करते थे, जैसे गेहूँ होते थे, धान उगाते थे, साल भर के खाने के लिए खेती हो जाती थी। आजकल हो रहा तो आजकल 1 महीने के खाने के लिए नहीं हो रहा। शादी त्योहारों में तो हमने बहुत बहुत दूर से भी लाना पड़ता था पानी सर में। सब लोगों से बोलते थे, एक के घर में शादी हो पूरे गांव वाले से बोलते थे कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, तुम हमारे यहाँ पानी लाने आ दो करके। सब लोग इकट्ठा होकर के गाड़ गधेरे से भी पानी लाते थे हम, इतने लोग। अगर जब कभी भी खास अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। कभी बच्चों से मंगवाते थे, चाहे 1-2 लीटर की जर्किन में ही लाए, चाहे 2 लीटर के डब्बे में ही लाए, वो बेचारे लाते थे तब ताकि हम पानी पिए। But the times have changed. Deepa is now capable of farming tomatoes, cucumber, capsicum, brinjal, and other vegetables without the fear of animal or hailstorm. Geeta and her friends don't have to climb mountains to get their family clean drinking water. With the solar pump installed, she can now do it at the push of a button. Just like them, 800 women and their families have developed resilience towards erratic weather and ensured sustainable livelihood. So the question is, how did this happen? It all started in 2016 when the project titled Climate Smart Actions and Strategies for Sustainable Livelihood of Agriculture-Dependent Hill Communities was introduced in 10 villages of Champawat district. This was planned as a meticulous project which introduced need-based, region-specific, multi-sectoral climate-smart interventions, practices, scientific technologies and services. The foremost step had been to ensure availability of water through spring rejuvenation and recharge of groundwater through trenches, gabions and plantations. Availability isn't enough. Conservation of water is equally essential. Therefore, rainwater harvesting and use of drip and sprinklers for irrigation has been extensively promoted. Against a prevalent agrarian crisis, the next step was to introduce climate-resilient farming and livelihood practices. Low-cost bamboo-based polyhouses are encouraged, which provides protection from adverse weather and feral animal attacks. Conservation and revival of native crops, promotion of temperate and subtropical horticulture help diversify the livelihood. Silvopasture development on degraded lands further strengthen the assurance of ecological restoration, fodder and various ecosystem services in the region. फिर मौसम बदलाव हो गया, सेब होना बंद हो गया, तो आजीविका चलना मुश्किल हो गया, तो सेब हो नहीं रहे थे।
फिर ऐसा सोचा कि हमने कुछ और किया जाए। फिर ऐसी बाइक की योजनाएँ आई, उस पर पेड़ आए, वहाँ आड़ू के पेड़, खुबानी के पेड़ ये लगाना शुरू किया हमने, और अच्छी पैदावार भी हो रही है और बेच रहे हैं, आजीविका अच्छी चल रही है। बारिश हुई तो टमाटर खराब हो जाते थे हमारे, सारे पत्ते गिर गए, काले पड़ जाते थे, तो हम कुछ नहीं कर पाते, खाने के लिए नहीं होते थे, फिर बेचने के लिए कहाँ से होंगे। तो पॉली हाउस लगाया, तो उसके बाद हमारे टमाटरों में थोड़ा हमें फ़ायदा हुआ। टमाटर हम बेच भी पा रहे हैं, अपने घर की सब्जी भी अपने घर के यूज के लिए भी उगा पा रहे हैं। In line with BAIF's operations, modern and scientific interventions like weather alert system and sharing of beneficial government schemes through SMS are introduced. In case of livestock, improved breeding through sorted semen technology along with feed and nutrition care and climate-proof housing is established. While all of this provides a safety net for the communities, they are now leading these interventions by themselves with carefully built institutions. Around 101 groups including one Panchayat Committees, Jal Samiti, Polyhouse Owners Group, Farmers and Livestock Keepers Group are formed to ensure ownership, equitable distribution and prolonged sustainability. Hill women have a close-knit relationship with forests and mountains. Evidently, they have taken up pivotal roles in bringing resilience towards climate changes in their community with the newer climate-smart practices and interventions. बढ़ने की तरकीब जब पेड़ लगवाए, नेपियर घास लगवाई, ट्रेंचिंग खोदे, तालाब बनाया, तब से हमारा पानी बढ़ने लग गया था। हमारे गांव में पानी आया तो हम इतना खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा, इतनी खुशी मिली थी कि हम आप लोगों को बता भी नहीं सकते। नौले से पानी लाते लाते सर के बाल खत्म हो गए सारे। It had been a challenging journey, says Dr. Dinesh Raturi, coordinator from BAIF. While the craggy terrain, altitude and remote locations offer a major challenge to the implementation of any project, the relentless team of BAIF, with support of NABARD team, has executed some major milestones in the last 4 years. The story of Champavat project is a story of transformation. It stands as a beacon amidst a changing landscape and deteriorating livelihood. It shows how to reduce climate change-related vulnerability of farming communities in mountains. As the climate changes from bad to worse, climate-smart actions become essential to be upscaled and implemented in other parts of the Himalayas.